Hello, it's Mahee. Welcome back to my channel. Today I will show you this pink cut crease makeup look. So let's get started. So at first eyelids पर concealer apply कर रही हूँ. And then उसको blend कर रही हूँ. So after blending concealer को set करने के लिए I am using setting powder. And then मैं apply कर रही हूँ light orange eyeshadow on my crease line. उसके बाद एक शेड deep orange eyeshadow यूज कर रही हूँ. And apply कर रही हूँ अब एक reddish orange eyeshadow. Next concealer यूज करके मैं cut crease create कर रही हूँ. उसके बाद इनर आईलिड पर येलो आईशैडो यूज कर रही हूँ. एंड देन मिडिल आईलिड पर पर्पल आईशैडो अप्लाई कर रही हूँ. दोनों आईशैडो को अच्छी तरह से ब्लेंड करना है. एंड देन आईलिड के आउटर कॉर्नर में अप्लाई करना है डीप पिंक आईशैडो. एंड देन आंखों के आउटर कॉर्नर में एक वी शेप क्रिएट करना है विद अ डीप पर्पल आईशैडो. After that, I am blending the crease line with a clean brush. Then जितने भी सारे मेस है आंखों की साइड पे उसको मेकअप रिमूवर से क्लीन कर रही हूँ. एंड एक पिंक शिमर लेके मिडिल आईलिड पर अप्लाई कर रही हूँ. एंड ऑफ कोर्स नाउ आई एम अप्लाइंग फाउंडेशन. अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद आई एम अप्लाइंग कंसीलर. कंसीलर लगाने के बाद सेटिंग पाउडर लेके मेकअप को सेट कर रही हूँ. नाउ आई एम कॉन्टूरिंग माई फेस. कंटूर हो जाने के बाद आईब्रो को ड्रॉ करना है तो मैं वही कर रही हूँ. Now I'm applying blush. इसके बाद लोअर आईलैश पर एक ब्लू कलर एंड देन एक ग्रीन कलर आईशैडो अप्लाई कर रही हूँ. एंड आई एम कर्लिंग माई आईलैश.
एंड देन ऑब्वियसली आई लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। आईलाइनर लगाने के बाद मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ एंड देन हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। हाइलाइटर लगाने के बाद आई एम ड्राइंग माई लिप्स विद अ लिप लाइनर। And then I am applying lipstick. Finally, I will complete my makeup with using setting spray. So this is my final look. If you like this look, please like, share and comment, and don't forget to subscribe my channel, and please click the bell icon for more videos. You can also follow me on social media. Links are in the description box. Love you. Bye bye.